Hello everyone, this is your own teacher Gregory, gives an enthralling, enthusiastic, energetic, and a fresh welcome into a very fresh video session of grade 7's English. And the topic that we are going to cover in this video session could be said one of my all-time favorite, and that is nothing but, as you can see on your screen, it's Wuthering Heights, written by Emily Bronte. And this is Bronte both. It has been pronounced as. Okay, let's see what we have in this book. This is one of the finest novels in English, generally known as classic. And let me tell you what a classic is. Classic is something which was written, which was sung, which was made, which was picturized. You could say that years ago, ages ago, but still people are watching, listening, and reading it. That is known as classic. Something which was done, something which was created ages ago, but still people are reading or watching it. That's known as classic. So Wuthering Heights is one of the classics of English. Let me tell you the importance of this novel, that if you are going to do masters in English, this novel it actually will be in your course of masters in English, so you can understand that how important this novel is. And when it comes to its taste and genre, I'll come to that later. But this version of this Wuthering Heights is actually the simplified form, which is especially made for the students to learn and know the story of Wuthering Heights. This is not the real Wuthering Heights novel. If you talk about this has only 12 chapters, but the real Wuthering Heights possess 24 chapters, and it is way, way, way bigger than this. Okay, if you would ask me then how many pages do we have in this novel, so we do not have pages more than 116. The maximum number of pages of this novel is 116, but that is way, way bigger. But what I'm talking about. So I hope that I've given you an introduction. Let's talk about that. These are the contents that we are going to cover, and we are going to cover the chapter 1. Let me give you some introduction of this novel. You will love this novel because it's a melodrama. It's a love trilogy in which the love triangle goes from one side to the other. Wuthering Heights is the only novel by Emily Bronte, considered one of the finest. Okay, first of all, it has to be pronounced as Emily Bronte or Bronte, like that. That's the name you would say is really tough to pronounce, but really lovely to listen. Considered one of the finest writers of the 19th century. 19th century means 1800 and something, because this is the 21st century. But what do we write? 2020. So the centuries which is going on, we always consider that like 21st, which is going on. So if we are talking about 19th century, this means that 1800 and something. A haunting story of love and revenge. This is a haunting story of love and revenge. You'll find a total melodrama, up and down. It's really, really lovely, mesmerizing. I could guarantee you that this experience of this novel will never ever be forgotten ever in your life. It takes place at Wuthering Heights. It is actually a story of love and revenge, which takes place at a place entitled as Wuthering Heights, at which the title of the novel has been given as Wuthering Heights. So in general, Wuthering Heights is the name of a place or a house. And this story goes around that Wuthering Heights. That's why this novel has been given the title as Wuthering Heights. Okay. A house on the wild and beautiful Yorkshire moors. Let me tell you one thing, that you all must have heard the name of New York. So let me tell you one thing, that when America got freedom from the British rule in 1776, there was a place in England known as Yorkshire. So when they had been to a new place and call it America, so they made a new place over there entitled as New York. Like we have New Karachi in Karachi. This means a place, like you have reinvented Karachi. That's why they call it New York. So Yorkshire is the place at England. Okay, fine. So this story actually goes around at Yorkshire moors. What is a moor? Moor is actually
a patch of land, a ground with wild grasses, with no houses, which is sort of barren and abandoned. Abandoned means where people are not living, where wild grass and weeds are growing everywhere, and there are no people living in that place. Those are known as moors. And in that moor, there was a house named as Wuthering Heights, and the moor was in Yorkshire. So there was a Sir? city, I would say, and named as Yorkshire. In that Yorkshire, there was a moor. There was a place, abandoned place. In that abandoned place, uh, the place, the home named as Wuthering Heights. Muhammad Hussain has raised their hands. Yes, Muhammad Hussain, if you would like to ask something, you Yes, can write sir. me on the chats. Sir, I cannot understand clearly. Please explain in Explain in सर सही से उर्दू में सर समझाऊं? यस सर उर्दू में समझाना पड़ेगा. बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई विल ट्राई टू कम अप विथ. ठीक है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूँ. देखिए, ये नॉवल जो है इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. इसकी इंपॉर्टेंस आपको ऐसे समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं इंग्लिश में, तो आपको मास्टर्स में ये कोर्स पढ़ाया जाता है, यानी ये नॉवल पढ़ाई जाती है कोर्स में. जैसे आप अभी ग्रेड 7th 6 में पढ़ रहे हैं ना इसको, वैसे ही ये मास्टर्स के लेवल में ये नॉवल पढ़ाई जाती है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है इंग्लिश लिटरेचर में. लिटरेचर क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ पहले. किसी भी लैंग्वेज में कोई भी चीज अब तक लिखी गई है, जब से वो लैंग्वेज बनी है, वो इसका लिटरेचर है. चाहे वो कोई एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो कोई बुक हो, वो कोई मूवी स्क्रिप्ट हो, या कोई प्ले हो, whatever has been written in any language is known as the literature of the language. समझ आ गई बात? कुछ भी लिखा गया है किसी भी लैंग्वेज में, वो क्या है, वो उसका लिटरेचर होता है. इवन आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, आपने सुना होगा ना, जहां मामता वहां डालडा, तो ये भी उर्दू लिटरेचर का हिस्सा है. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में वेरियस नॉवेल्स हैं, और बहुत सारी नॉवेल्स ऐसी हैं कि जो बहुत ही लाजवाब है. ठीक है, लेकिन इस नॉवल को क्लासिक्स का दर्जा हासिल है. क्लासिक किसे कहा जाता है, मैं आपको ये समझा देता हूँ. क्लासिक कहा जाता है कोई ऐसी चीज, इट्स नॉट क्लासिक, इट्स क्लासिक. व्हाट इज इट? क्लासिक, not classic, classic. क्लासिक Yeah, that's really good. So if I would tell you that what a classic is, कोई भी ऐसी चीज जो सालों पहले, सदियों पहले लिखी गई हो. मिसाल के तौर पे कोई एक ऐसी मूवी जो 1990s में बनाई गई हो, लाइक टाइटैनिक मूवी हॉलीवुड की ऐसी है जो कि क्लासिक का दर्जा रखती है. क्यों दर्जा रखती है? क्योंकि लोग उसे आज भी देखते हैं और पसंद करते हैं, और उसे जिस तरह से बनाया गया था वो एक मास्टरपीस, एक क्रिएटिविटी की आप कह सकते हैं. दैट इज द पीक ऑफ क्रिएटिविटी produced by James Cameron, the producer of that movie. Like that, this book, The Wuthering Heights, was written in 19th century. This means 200 years ago, but still we are reading it. So this means that it is very, very good. That's why it is still alive. ऐसे बहुत सारे गाने आप सुनते हैं, मूवीज आप देखते हैं जो आप देखकर भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी कई मूवीज, गाने, बुक्स आप पढ़ते हैं, गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, या कार्टून्स देखते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं. जैसे आपने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे, बट Ben 10 is one of the classics. Tom and Jerry is one of the classics. हर उम्र के, हर दौर के लोगों ने इसको पसंद किया. That's what classic is. अब आपको उम्मीद है क्लासिक से. अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि भाई ये Wuthering Heights क्या है. It's a classic. और इस क्लासिक में इसको लिखा कहाँ गया है? लिखा है एमिली ब्रॉन्टे ने, और 19th सेंचुरी में लिखा है. सेंचुरी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी चीज जो कि, अब मिसाल के तौर पे मैं अभी आपसे बात करूं तो 21वीं सदी चल रही है, लेकिन हम इसको लिखते हैं सन 2020. तो जो सदी चल रही होती है हम उसे ही गिनते हैं. तो 19वीं सदी का मतलब है, 19th सेंचुरी का मतलब है 1800 एंड समथिंग में ये नॉवल लिखी गई है. और इस नॉवल को प्लॉट किया गया. देखिए, हर स्टोरी को प्लॉट किया जाता है. आप मूवीज देखते हैं तो कोई मूवी इंग्लैंड में बनी होती है, कोई पाकिस्तान में, कोई इंडिया में, कोई कहीं कोई कहीं. तो हर मूवी का एक प्लॉट होता है, एक जगह है जहाँ पे उस मूवी को पिक्चराइज किया जाता है. वैसे ही नॉवल में भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जगह पे क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं, या आप कह सकते हैं एक प्लेस में उनको कैरेक्टराइज किया जाता है. और जिस प्लेस में इस नॉवल को कैरेक्टराइज किया गया है, प्लॉट किया गया है, प्लॉट मतलब कहानी लिखी गई है इसकी, तो ये प्लॉट जो है वो कहाँ है? यॉर्कशायर में है. और यॉर्कशायर जो है दरअसल एक जगह है, एक सिटी है, आप कह सकते हैं इंग्लैंड में असली में है,
और वहां के मूर्स में, अब मूर किसे कहते हैं, एक ऐसा मैदान जहां पे जंगली घास उगी हो, ठीक है, ऊंची नीची जगह हो, ऊंचे नीचे टीले हो, ठीक है, और उन टीलों के दरमियान में कुछ भी ना हो, आगे पीछे हर तरफ से नाटा हो, उस चीज को कहा जाता है मूर, ठीक है। और मूर्स का मतलब समझ गए आप, वुथरिंग हाइट्स जो है एक मूर, यॉर्कशायर में एक मूर है, एक अबैंडन जगह है, उस जगह पे एक घर है जिसका नाम है वुथरिंग हाइट्स। उस वुथरिंग हाइट्स के गिर्द ही इस पूरी नॉवल की कहानी घूमती है, और इसी नाम पे इसको क्या किया गया है, इंटाइटल किया गया है इस नॉवल को। अब कहानी कैसे शुरू होती है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। Heathcliff begins his life as a homeless orphan, taken to Wuthering Heights by Mr. Earnshaw to live with his children. ठीक है, Heathcliff कौन है? Heathcliff एक कैरेक्टर इसमें है, आप आगे चलकर समझेंगे क्या है, जो कि यतीम है, और इस यतीम बच्चे को वुथरिंग हाइट्स के मालिक हैं अर्नशॉ, उनका नाम क्या है? His name is Mr. Earnshaw, like that I would say. मिस Earnshaw is the owner of the Wuthering Heights. तो वो कहीं जाते हैं और अपने साथ इस बच्चे को लेकर आ जाते हैं ताकि वो उनके बच्चों के साथ रहे, क्योंकि वो ऑफन होता है. And Heathcliff fall in love with each other. Okay, sorry. Catherine and Hindley. उसके उनके दो बच्चे होते हैं Earnshaw के, जिनका नाम क्या है? Catherine and Hindley. It's Catherine. You are supposed to pronounce it really well because these are the very, very important and major characters of our novel. The fiercely passionate Catherine and Heathcliff fall in love with each other. इस कहानी में क्या होता है, जो passionate Catherine और Heathcliff हैं, they fall in love with each other, but their relationship is dark and stormy like the moors. But their relationship is dark and stormy like the moors. यानी इनको मोहब्बत हो जाती है आपस में. किसको? कैथरीन को. कैथरीन कौन है? अर्नशॉ की बेटी है. अर्नशॉ के खुद के दो बच्चे थे, हिंडले और कैथरीन. हिंडले बड़ा था, कैथरीन छोटी थी, ठीक है. और यहाँ पे वो एक यतीम बच्चे को लेकर आते हैं जिसका नाम था हीथक्लिफ. हीथक्लिफ को मोहब्बत हो जाती है कैथरीन से, ठीक है, लेकिन इनकी मोहब्बत को बहुत ही नशेब फराज का सामना करना पड़ता है. they had to see a lot of dark phases in the love life, I would say. So this is actually a novel in which we'll talk about this and other, but they are okay with each other, but their relationship is dark and stormy like moors. Wuthering Heights was published in December 1847. So, okay, it's written as Wuthering Heights was published in December. Now, there are some knowledge about when it was published and who has written all that. Wuthering Heights was published in December 1847, approximately 200 years ago, under the pen name Alice Bell. And the writer name of that time was Alice Bell. देखिए, मिसाल के तौर पे मेरा नाम है अजहर खुर्शीद, ठीक है, और अगर मैं कुछ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं शायरी कर रहा हूँ या मैं नॉवल लिख रहा हूँ, तो मैं अपना नाम वहां पे क्या लिख दूंगा? मैं वहां पे अपना नाम लिख दूंगा शख्स मुमताजी, मिसाल के तौर पे, या मैंने अपना नाम लिख दिया वहां पे नायाब, इस तरीके से कुछ भी नाम, ठीक है. नायाब तहरीर के नाम से मैंने अपनी पब्लिशिंग शुरू कर दी. मिसाल के तौर पे आप इसको अभी वैसे ही ले लें कि किसी शख्स का नाम कुछ और होता है और वो अपना यूट्यूब चैनल किसी और नाम से बनाता है, तो मशहूर अपने यूट्यूब चैनल से हो जाता है, वो अपने नाम से नहीं होता. तो बिल्कुल वैसे ही पुराने जमाने में, या एक्टर्स भी ऐसे होते हैं बहुत सारे जिनका नाम एक्चुअली कुछ और होता है, वो एक्टर यानी एक्टिंग में वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं ताकि उसको मोर करिस्मेटिक बना सकें. तो वैसे ही पुराने जमाने में पैन नेम्स हुआ करते थे, और आज भी होते हैं लोगों के, लेकिन आजकल लोग कोशिश करते हैं कि अपने नाम से ही मशहूर हो. तो इनका पैन नेम लिखा गया था. व्हाट वाज दैट पैन नेम? इनका पैन नेम था एलिस बेल. ये किताब सबसे पहले शाया की गई थी 1847 दिसंबर में, और इस किताब को शाया जो किया गया था तो उसमें राइटर का नाम एलिस बेल लिखा गया था. richly imaginative and intensely emotional. और ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है. I would say that richly imaginative and intensely emotional. I would say that the movies and cartoon that you watch these days is actually relates somewhere from this when it comes to this love and emotion. बहुत ही emotional और बहुत ही imaginative कहानी है ये, ठीक है. It was noted for its unusual structure but received mixed reviews about a year often Emily Bronte death in 1848. ठीक है. इस किताब को जो है मिक्स रिव्यू मिला था, कुछ लोगों ने पसंद किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था. और इसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा घूमा फिरा हुआ है. इसमें यानी कि रिश्तों की सारी गेम है, पेचीदगियां हैं, कौन किसका भाई है, किसको किससे मोहब्बत हो जाती है,
किसकी किससे शादी हो जाती है, कौन किससे बदला लेना चाहता है, सब कुछ इसमें आपको घूमा फिरा सा मिलेगा। और इस पजल को ही हम सॉल्व करेंगे इस पूरी कहानी में, यानी बहुत आपको मजा आने वाला है इसमें। अच्छा, 1848 में इसकी किताब के शाया होने के अगले साल ही इसकी राइटर एमिली ब्रॉन्टे की डेथ हो गई थी। तो लोगों ने इसको एक नॉर्मल रिव्यू दिया, कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा कहा, मिक्स रिव्यू आया था। यू कैन नॉट से दैट इट वाज अ फ्लॉप और इट वाज अ हिट, लाइक दैट, ठीक है। हर सिस्टर, ओके, about a year after Emily Bronte's death in 1848, her sister Charlotte, author of Jane Eyre, इनकी बहन थी चार्लोट नाम था उनका, revealed the truth of the novel's authorship. The novel later came to be considered a classic. It has been filmed several times. क्या बताया जा रहा है कि बाद में उन्होंने बताया कि इसकी जो राइटर है उसका असल नाम क्या है। उनकी बहन चार्लोट ने बताया कि इस राइटर को लिखने वाली एलिस बेल नहीं है बल्कि एमिली ब्रॉन्टे है, और एमिली ब्रॉन्टे के बारे में उन्होंने बाद में बताया। और इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, ठीक है, और इसको क्लासिक का दर्जा हासिल है आज। उस जमाने में शायद लोगों ने इसको पसंद ना किया, लेकिन बाद में इसकी इंपॉर्टेंस लोग जानते हैं। अब एमिली ब्रॉन्टे के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। Emily Bronte, author about Emily Bronte. Emily Bronte was born in 1818 and died in 1848. Was an English writer, best remembered for her only novel, Wuthering Heights. First published under the pen name Alice Bell, as I told you. Not much is known directly of her. Almost everything that is known about her comes from the writing of others, especially her sister Charlotte, who later wrote Jane Eyre. Okay, इनके बारे में ज्यादा नहीं पता है, ठीक है, इसके ये किताब कब शाया होती है और ये कौन थी, लेकिन जो कुछ भी इनके बारे में पता चला है वो ज्यादातर उनकी बहन नहीं बताया है कि वो कौन है। वो है चार्लोट, जिन्होंने उनकी खुद किताब लिखी है, जेन आया नाम था। Emily was born in Yorkshire, Northern England, into a clergyman's family. She was the younger sister of Charlotte Bronte and the fifth of 6 children. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? बताया यहाँ पे ये जा रहा है कि एमिली ब्रॉन्टे यॉर्कशायर में पैदा हुई थी, जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आप कह सकते हैं इस नॉवल को प्लॉट किया है, या असल में ही उनका घर था नॉर्दर्न इंग्लैंड में, ठीक है। और ये एक क्लर्जीमैन की फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जो क्लर्जीमैन से कहते हैं, जो पादरी होते हैं ना, पोप, उनकी फैमिली से इनका ताल्लुक था, ठीक है। शी वाज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ चार्लोट ब्रॉन्टे एंड द फिफ्थ ऑफ 6 चिल्ड्रन, यानी चार्लोट ब्रॉन्टे की ये से छोटी थी ये, और ये तमाम भाई बहनों में, एंड द फिफ्थ ऑफ 6 चिल्ड्रन, 6 भाई बहन थे ये लोग, उसमें इनका नंबर 5वां था, और इनसे बड़ी थी चार्लोट, ठीक है। The family lived in Haworth, a West Yorkshire village in middle of the moors. और ये रहते कहाँ थे? Haworth में रहते थे, जो कि वेस्ट यॉर्कशायर में। ये पैदा हुई थी नॉर्थ में, लेकिन ये रहती कहाँ थी? Haworth, यॉर्कशायर वेस्ट में, ठीक है। और वहां पे एक गांव था जिसका नाम था Haworth, ठीक है, in the middle of the moors, उसी moors में। After their mother died in 1821, 4 of the sisters were sent to a boarding school where living conditions were so bad that 2 of them died. After that, the remaining children stayed at home and educated themselves by reading widely. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया तो ये तमाम बच्चों को कहाँ भेज दिया गया? बोर्डिंग स्कूल. You know what a boarding school is? Where the children live and stay over there and study over there. लेकिन वहाँ लिविंग कंडीशंस इतनी बुरी थी कि वहाँ पे जो 6 में से जो 2 थे उनकी डेथ हो गई, और आगे जो है बकिया के जो बच्चे बच गए थे, ठीक है, वो सब के सब घर में ही रहते थे और पढ़ते रहते थे, और अपने आप को उन्होंने ऐसे एजुकेट किया। To escape their unhappy childhood, they wrote stories, plays and poems to amuse themselves. अपनी इस बचपन को खुशगवार बनाने के लिए वो कहानियां लिखते थे, पोम्स लिखते थे, प्लेज लिखते थे। The daily environment, the wild remote moors that Emily loved became the setting of Wuthering Heights. और जो इनकी रोजाना की जिंदगी में जो इर्द गिर्द का माहौल था, क्योंकि वो लोग कहाँ रहते थे? मूर्स में ही रहते थे। होवर्थ का गांव था और वहां पे एक बोर्डिंग स्कूल था उसमें। तो उसने इसी चीज को कंसीडर करते हुए, जहां वो रहती थी, क्योंकि उसे बड़ा पसंद था, एमिली ने वुथरिंग हाइट्स में उसी जगह को अपना प्लॉट बनाया है कहानी का, ठीक है। आगे क्या बताया जा रहा है? चार्लोट्स जेन आया was published in 1847, also under a pen name and became an immediate success. जबकि चार्लोट ने जो जेन आया लिखा था वो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, ठीक है। Emily's Wuthering Heights, with its complex story and descriptions of passionate love and cruelty, appeared the same year and received mixed reviews, though today it has become a classic of English writing. ठीक है, उस वक्त तो उसकी बड़ी बहन चार्लोट ने जो जेन आयर लिखी थी वो बहुत ज्यादा मशहूर हुई, लेकिन वुथरिंग हाइट्स को मिक्स रिव्यू मिला, ना बहुत ज्यादा पसंद किया गया, ना बहुत ज्यादा नापसंद किया गया।
लेकिन बाद में इसे क्लासिक का दर्जा दिया गया इंग्लिश राइटिंग में। एमिली डायर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी का नाम आपने सुना होगा ना, टीबी हो गया था फलां को, तो टीबी को ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, ये बीमारी होती है, ठीक है। In 1848, having caught a cold at her brother's funeral, अच्छा उसके भाई की मौत पे, जो फ्यूनरल हुआ था उसकी भाई की मौत पे, उसकी वजह से उसे ठंड लग गई और उस ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई क्योंकि उससे ट्यूबरक्लोसिस था ऑलरेडी। तो आज मैंने आप लोगों को अब तक यहाँ पे जो भी बताया है बच्चों, यू आर सपोज टू कंसिडर इट, क्योंकि इसके हवाले से आपसे असेसमेंट होने वाली है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू ऑल एंड वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन।